हेलो दोस्तों, आज लर्निंग ट्यूब में हम रिप सीखेंगे। सॉलिडेज में रिप का यूज कैसे होता है, टूल्स। पहले हम कोई एक्सट्रूड बॉडी ले लेते हैं और वन साइड ओपन बॉडी लेंगे। अब हम एक्सट्रूड बॉडी और इसको क्लोज कर देंगे वन साइड। थिन वॉल और रिप कोइंसिडेंट प्लान, डायरेक्ट प्लान। रिप एकदम सिंपल ही है, एक लाइन, स्क्रेच। एरिया क्लोज नहीं होगा, ओनली फॉर डाउन। दीवार खड़ी कर सकते हैं, पार्टीशन वगैरह, कोई भी बॉक्स वगैरह में इसका यूज हो सकता है। कोई पार्ट, डोर की डिजाइन करते हो, डोर बॉक्स, पैरेलल में प्लान लेके 30 और उसमें हम एक कॉर्नर में स्टेप रखेंगे। क्लोज और ये एक दूसरा रिप का यूज कैसे होता है। एक लाइन और रिप। ओके, रिप का यूज ऐसे होता है। डोर में हम वायर फ्रेम करके देख सकते हैं उसके अंदर का कहाँ काम क्रिएट करना है, कैसे करना है। आज हमने रिप सीख लिया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग लर्निंग ट्यूब।